Got it. And हर odd numbered question का जो answer है, that will be the first hint for the even numbered question. Effectively, so you start with some context to the even number. So question 1 का जो answer रहने का, that should get you started on the question 2 का connection. And connection is literally connecting all the clues in front of you, not like one word कि अच्छा this is Mumbai and all 4 pictures are about Mumbai. ऐसा नहीं होगा. Okay. ठीक है? There might be 1 or 2 exceptions, but mostly it's this. ठीक है? So let's play this, and maybe first question के बाद we will have some आइडिया हो जाएगा. ओ चलो हाँ. चलो चलो चलो. Okay. गेड़ भाव. मैं तो आज note कर रहा हूँ पूरा. To you. Okay. करो वास्को. It's an iconic Italian character, has been played by many actors over the years. Chris Pratt is probably the most famous. Lou Albano, a pro wrestling personality, wrestler and manager, whatever, has also played this character in a TV show. The character has appeared in multiple media formats, some more successful than the others. Which character are we talking about? एक मिनट, मीडिया फॉर्मेट्स मतलब मूवी सीरियल ऐसे, या आर यू सेइंग MP3 MP? नहीं, not the dot whatever extensions. Not encoding formats, it's just the yeah. Like TV, whatever, cinema, advertisements, like that. Mario. Yes, correct answer. Acha, so every odd numbered question is 10 and 5. Every even numbered question is 20. And that 20 is only when you actually figure out the entire connection. Okay? So the correct answer to question 1 is Mario. 10 points. Gadebao, well played. Well, good start. ये अब्बे वाला मारियो का मूवी देखा कुछ दिनों पहले. उसमें ना क्रिस प्रैट. अच्छा, मैंने ये क्वेश्चन मार्क वाला बॉक्स वाला हिंट भी छोड़ा था वैसे, अगर किसी को याद देखा नहीं हो. गुड वन. अरे मैंने देखा भी नहीं वो. शिट. गुड मूवी. मजा आ गया मेरे को. अच्छी मूवी है वो. हम लोग रोज खेलते हैं ना मारियो घर पे. देखा क्या तुमने किसी ने? मैंने देखा. नहीं, मैंने नहीं देखा. हमको अभी गार्डियंस देखने का है. नहीं, देखने जाओ. उसमें वो मंकी के साथ की फाइट कॉन्ग के साथ के बहुत ही मस्त दिखाई है. गजब क्रिएटिविटी है साला, सीरियसली. सही में. ओके. So let's go to question 2, which will go to Rampi. Okay, now Rampi will show you 4 pictures. You have to connect. So you see the first question is your starting point. Answer to the first question. You go left to right and connect these pictures. This is some shit that you can't Google, honestly. बहुत छोटे हैं फोटोज, बड़े कैसे करूंगा? गांधी जी है क्या वो? हाँ. आंखें चेक कराओ. फोन पे देख रहे क्या? फोन पे देख रहे तो you can pinch zoom also. So first picture is a map, second picture is a logo, third picture is a crest, and fourth picture is a statue. पता नहीं. कनेक्शन बताने का है क्या? हाँ, you have to connect all 4 pictures. So you have to go from left to right. ये I don't know, totally wild guess है. सुभाष चंद्र बोस से कोई कनेक्शन है क्या ये? नहीं. And like I said, it's not a one-word answer. You literally have to go left to right. Okay, pass. Vipin? यार, so you said Mario. Trying to relate Mario. So NHS RCL. I mean, पहले से दूसरे पे दूसरा बता सकते हैं क्या? क्या है वो? You keep talking, that's fine. But point is,
you will need to हाँ, figure so out that is the high speed rail corporation. Correct. It's a bullet train in India, right? National High Speed Rail. Yeah. That is the bullet train. To first picture, I'm ध्यान से देखो, assuming that's ध्यान से देखो, फर्स्ट पिक्चर को ध्यान से देखो, दूसरा. आसानी से आ जाएगा फिर. First picture is the like the Kyoto, like the bullet train, first bullet train in Japan, right? No, that's So- okay. Okay, fine, go on. But I think it's in Mario Kart में आती है वो bullet train. Like there is some connection to Mario Kart for that bullet train, first one. Okay, anyway, go on. Go to the third. Third मुझे नहीं पता, but it seems like it's some, मतलब it seems like the crest of, मतलब उसमें ship दिख रहे हैं. Yeah, So you're on it's the right like, track. so like it's the some transport ministry का, मतलब surface water transport उसका कुछ seal है क्या अपने इंडिया का? No. फोर्थ वाला मुझे वो गांधी जी का कन्याकुमारी का लग रहा है कुछ. So there is no point in identifying the pictures. Identifying the pictures is a way to get to the connection. So there are no points for saying that this is Kyoto and that is high-speed railway. What is it that's connecting Mario to all this? Like, if you were to take Mario and connect it to the fourth picture, there is no connection. But if you go left to right, there would be a connection that gets established. बुलेट ट्रेन, दो बुलेट ट्रेन या मारियो कार्ट. So is it the different worlds in Mario game? No. जो अलग अलग worlds में जाता है. नहीं. I think you were on the right track, but you lost that one. Chintu? Okay, ठीक है, pass. ये तो मुंबई अहमदाबाद वाला तो सही है. ये जो थर्ड सील है इसमें गेटवे ऑफ इंडिया है, शिपिंग. दिस मस्ट हैव समथिंग टू डू विद शिपिंग. और क्या लिखा है? शनो, नीचे क्या लिखा है? Go back to what you were thinking earlier. You're now on wrong track. Mumbai. You started right. This is Mumbai. Mumbai. So this is probably the seal of some Maharashtrian government department. Can you attempt the connection now? I think you kind of have figured out all four pictures. The connection would be You literally think laterally. Fuck man, this is Mumbai, question of Maharashtra. the quiz. It should be. There might be some Shivaji Maharaj connection. No. You're almost there. Bipin sort of got it halfway. You kind of got halfway further, but you're not completing the story. So basically, you have to tell a story here. If you put Mario next to this on the left side, then that 5 pictures shall kind of tell a story, right? So Mario is connected to very bullet basic train. connection of Mario. There is no, you don't need to go into Mario world. There's that. मेरे को मालूम भी नहीं है, उतना मालूम भी नहीं है, but I'm assuming कि जो बिपिन ने बोला वो सही है कि Mario is connected somehow to bullet trains, जो Kyoto से sorry पहले चली थी. Jika is funding NHS RCL, or at least the Ahmedabad project. Then this is the seal of a division of Maharashtra. Excuse me. Don't know, yeah. यहाँ से इसके आगे I'll be less like random guessing. If Sherni, you're able to close this. Otherwise, I'll give 5 points each to Bipin and Chintu because they kind of got started pretty all right. मेरा भी guess ही होने वाला है कि वो Mario logo है of the bullet train. Nintendo is ये anyway मेरा ये पट्टू guess ही होने वाला है, but दे दो उन्हीं को दो. ठीक है, there is no hint round, so I'll give 5 points each to Bipin and Chintu for partly getting the way there. Now here's the answer. मेरे को नहीं पूछा. ओ तेरा था. Oh shit, sorry. ठीक है. It's Okay. all right. I'm done with nothing. मुझे लगा अरे हाँ, we started with Rampi. I'm terribly sorry.
Anyway, so this is how it would play the connection. Sabarmati. Mario is owned by Nintendo, a company headquartered in Kyoto, which you see in the picture 1, which is in Japan, which is helping India build bullet train, for which National Highway Speed Rail Corporation has been set up, and it will be the bullet train run between Mumbai, this is the crest of Mumbai itself, by the way, Acha. Oh. and Ahmedabad, which has the Sabarmati Ashram. So now, if you Oh. see, Mario has no connection to Sabarmati Ashram, But but has the Japan flow, if you go connection. left to right, that's what I was saying. That if you go left to right, you have so this is the pattern now you need to follow for all questions. Very Okay. good. Very good. ठीक है? सही Chalo, let's go to 3 now. This will go to Sherni because Bipin Chintu both got 5. 3 Khans came together on stage for this person. Who's this guy? You rarely see all the 3 Khans together, obviously. There was something that was happening. There is a hint in the picture itself. The arrows are not the hint. That's the Yeah. Google image wala hua hai. 21 something. Yeah, that's the right track to think. 21 और ये recent ही है. कौन हो सकता है ये? ऐसा लग नहीं रहा है. हाथ से ऐसा नहीं लग रहा. लंबा भी है. इन तीनों से तो सभी लोग लंबे हैं. हाइट में सिर्फ, करियर में तो इन तीनों से कोई लंबा नहीं है. एक्सेप्ट फॉर अमिताभ ऑब्वियसली. और गोरा सा भी है. Is this कौन है भाई? शायद दुबला भी है. It's not. I know it's not ऐसे बुड्ढे के हाथ नहीं लग रहे हैं वो, but The most commonly guessed person will not be there, I think. हाँ वो चलो, आंसर प्लीज. ऐसा लंबा और वो पैंट भी ऐसा. गोरा हाथ भी है. मुझे पता है, ठीक है. ओके, बहुत बढ़िया. नहीं मालूम है बस. गाड़े. Amitabh, but I know it's not the right answer. No, it's not Amitabh. Rampi. अंबानी है क्या? नहीं, टिंकू है वैसे. विपिन. आपकी अदालत रजत शर्मा. Correct answer. 10 points to Bipin. Beautiful. Rajat Sharma. 21st anniversary of Aapki Adalat, basically. Okay, so the connection question now goes to Chintu. Rajat Sharma. All right. Yeah. Same pattern as before. Isme pehla question is already Rajat Sharma anyway. So the 3 other pictures are there. It's very much workable if you think about it. Well, Madan Lal played in the 83 World Cup where Viv Richards also played. This is Viv Richards' daughter. The third one. चौथी कौन है यार? So she's a fashion designer, and maybe the clothes that this woman is wearing is the fourth woman is wearing is designed by Viv Richards' daughter. No. Passing to Sherni. वो कुछ भी करेक्ट था क्या उसने जो बोला इससे पहले?
Obviously Madanlal and Masaba Gupta is right. नहीं वो ठीक है, he's recognized The rest- them, but the the rest- connection. No. So like I said, you have to go left to right. ये तीसरी वाली विवियन रिचर्ड्स की डॉटर है क्या? हाँ वही तो बोला मसाबा चिंटू। गुप्ता, correct. क्या नाम है उसका? मसाबा 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 गुप्ता, गुप्ता। नीना गुप्ता और वीर रिचर्ड्स की बेटी. नीना गुप्ता का की बेटी है. ये okay, Rajat Sharma beat Madan Lal in that Delhi Cricket Association ke elections, Right. and how's that related to Masaba Gupta? ये लास्ट वाली वो है क्या जो मैं सोच रहा हूँ? Which? I can recognize the fourth person, but how is that? I हाँ, think मुझे भी वही लग रहा है ये. connection might just be difficult for a lot of people. But if you get up to that through to Masaba, then we can have part points. I think second one, Chintu was kind of thinking on the right track in some sense. Madan Lal, TDCA election. I'll give you 5 points for that. That was a difficult one. So. Okay, I'll recognize the fourth person for what it's worth. उसका नाम अदिति राव हैदरी है. Yeah. And so this इन दोनों के बीच का connection अत्यंत GM है basically. मसाबा और अदिति राव हैदरी. I mean, you can take a swipe at it, but if you followed recent entertainment news, Times of India पढ़ते हो तो शायद पता होगा connection. चलो Entertainment I news think हम तब पढ़ते हैं pass it to नहीं Tarek. बस move it आगे. ठीक है, you get विपिन 5 कभी points हमको special for first वाला. या गाड़े नहीं पास. I don't विपिन even भाव recognize the characters. पहले दोनों ही बताते हैं. Okay, Rampi. नहीं वो चिंटू का करेक्ट था आई थिंक वो दिस इज मदन लाल गेटिंग विव रिचर्ड्स आउट दैट कपिल देव कैच Yeah. एंड विव रिचर्ड्स डॉटर चिंटू ने ही जस्ट डिडंट से कि वो आई थिंक दैट्स द वन. That's why I said he was on the right track. He didn't say it though. हाँ तो वही है उस he just might have missed it. The fourth That's very connection obvious. I thought that was the easiest thing to figure yeah out. that was this thing yeah. Why last one I don't know. Maybe they appeared on Big Boss together. I don't think so. That didn't happen. Okay. So these last two, is it potentially sharing like a ex-boyfriend, current husband sort of situation together? Can you I'm tell the whole guessing story totally. then? Can you complete the whole story? So वो रजत मिश्रा, Rajat Sharma. Rajat Sharma, उस like whatever, Madan Lal defeated Rajat Sharma in elections. अबे उल्टा बोला. And उल्टा जो भी रजत, हाँ वो जो that like the connection is that then उसमें वीव रिचर्ड्स को आउट किया, वीव रिचर्ड्स ने नीना गुप्ता को आउट किया तो मसबा बाहर आ गई. ठीक है, फिर उसके बाद मसबा and Aditi Rao Hedri have shared some common ex-boyfriend or current husband Correct. at some point. Right. You may not know the name of the guy. So वो नहीं I'll पता. give 15 points to Bipin and 5 to Sherni. So, right, Rajat Sharma became DDCA press after beating Madan Lal, who's seen here about to take the wicket of Viv Richards. So this is the moment where Viv Richards hit. Kapil Dev is running behind and he's just looking, wala point hai. And Viv Richards is the father of Masaba. Masaba recently got married to Satyadeep Mishra, who was earlier rumored to be married to Aditi Rao Hedri. Okay? अदिति राव हैदरी भी एक्ट्रेस है क्या कि कोई हाँ, बहुत डिजाइनर famous. हाँ, इसमें थी ना वो राउडी राठौड़ नहीं, कौन सा? बॉस. पद्मावत में भी थी.
Okay. उसमें मुझे लगा कि उसको छोड़ के दीपिका को पीछे क्यों गया खिलजी, समझ में नहीं आया मेरे को. Okay, here's direct to Chintu. Identify this person whose filmography is below. Obviously, the picture is a deliberately chosen one, which is a very rare picture of this person. You would never imagine this person to be either dressed like this or smoking a cigarette. The filmography. ये right वाली को identify करना था क्या? हाँ, right वाली cigarette जो मुंह में है. And the दोनों filmography is exhaustive. So this person stopped acting in movies after 1947. Come on, Ella. Sorry, the person on the left here or on the right? Right, On the no? right, the one with the cigarette in the mouth. तलाई वांगी अपूर्व चिंतामणि. अय्यम्मा. So this picture is a backstory in some sense that she was trying to rebel against the very conservative upbringing and all the rules that were imposed on her. So she took a picture wearing these kind of clothes and having cigarettes. But I don't think she smoked, but she just posed with the cigarette just as a thing. But otherwise, you would never ever see a picture of her in Western clothing or smoking a cigarette or anything like that. This probably is a 1930s में कभी तो निकाला हुआ picture है. So that gives you an idea of how old that person must have been or whatever. So, okay, this is a super wild guess, but is it MS Subbulakshmi? 10 points. Correct answer. Oh. Okay. So yeah, one. Yeah, it was Subbulakshmi. If at all it had come to pass, then I would have given a hint as this is the voice of the morning in south of India. Okay, so connection round question goes to Sherni. Connect these straightforward. Now I've used the same picture, but there is it's Subbulakshmi and then this picture and then other two pictures. So there is something in Subbulakshmi's picture which is to be used for connection. वो ऐसा भी Subbulakshmi, Bourbon Street. This I discovered recently actually. कुछ कवर कर दिया तूने है? कुछ कवर नहीं किया. दूसरा वाला पिक्चर Bourbon Street का है. So no points in guessing the pictures. New Orleans, it correct. is Bourbon Street. New Orleans, yeah. And Louis Armstrong. क्या connection हो सकता है इन दोनों का मतलब? Yeah, right. So wild. I was zapped when I read this connection. Nominal. मतलब ultimate quizzing nerdy आप आए ये वाला सवाल. नहीं मालूम यार. Okay, got it out. You said there is something in the picture. Yeah. चलो है. Okay. This is very workable if you just. अगला if I can guess मैं guess करेगा but okay. I करूँ क्या? नहीं. Your round is gone. Sorry. ना ठीक है. It's okay. Thing in the picture. What is in the picture? Nothing is striking. Okay. Rumpy.
I don't know, but I'm guessing ki Subbulakshmi performed at a certain club in this certain club or certain this thing here, and that's also where Louis Armstrong performed. Or No. okay, Maybe it is, I don't know. I haven't researched that bit, if they performed in the same club or not, but that's not the connection. Bipin? Hey, random guessings. Subbulakshmi, MS Subbulakshmi is wearing nose ring. That is a club on Bourbon Street, No. and No. Louis Armstrong used the nose ring to play effectively. I don't know. Good try, good attempt. But Chintu? Where New Orleans में वो beads देते हैं, तो is the necklace she's wearing, she got it in a New Orleans thing and it was gifted to her by Louis Armstrong after listening to her or after knowing about her or whatever. No, not really. Sherni, you want to take a guess? मैं ये बोलने वाला था कि that picture of MS Subbulakshmi is her listening to Louis Armstrong's. I don't know. Again, I don't know if that is the case. No. So I'll tell you the answer. So in the picture, I think Bipin could have thought a little harder now, or Chintu also. If you see, she's wearing some flowers. And Teen options Subbulakshmi stay flower earrings. always wear these flowers. These are jasmine flowers. Jasmine flowers are available in Madurai flower market, Madurai Malli. And French perfume makers come to Madurai to select these flowers. And then the jasmine oil is used to make perfumes, which got used by prostitutes on the streets of New Orleans. So Bourbon Street is an example of a street in New Orleans. And they used to be called jasm. And when they used to solicit, they used to say, do you got the jasm? And that became jazz. Oh, Wow. so maybe, and also maybe jism. Jism, yes. So there are multiple theories to that. Jism was another one. So to add to it, a perfume was called jazzing it up. So the strong scent was popular in the red light district where the working might approach a prospective customer. Is jazz on your mind tonight, young fella? That's why jazz. मैं तो सिर्फ मैसूर मल्ली के पता है. मैसूर मल्ली के क्लिप देखा था हमने. अच्छा. Okay. So whose was this? Sorry. This was Chintu's direct, na? So now I think nobody नहीं, ये answered. शेरनी का direct था boss. Oh, sorry. So nobody answered. So again to Sherni only. Listen to this. So this is a medley of songs performed by Mahesh. So it's a long medley जिसके मैंने pieces निकाले हैं. Listen carefully. Answer is in the somewhere in the song, but maybe you'll have to just listen carefully. क्या है सवाल क्या है? Are you able to hear the audio? Yeah. सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है. भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है. हिंदुस्तानी नाम हमारा है. सबसे प्यारा देश हमारी धावा मागरे. हे पुढे बसलेली लोक खूप चिंगूस आहेत का हो. पानी धावा मागरे की कुणी स्वयं प्रकाशी तू तारा. स्वयं प्रकाशी तू तारा. चैतन्याचा गाभारा. प्रेमापणी सासा. वंदे मातरम.
शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। ओके शेरनी, ये सारे AR रहमान के भी गाने हैं। नहीं, that's not the answer. गाड़े भाव, ये सब डिफरेंट राग है। फिर से बोल। ये जो अलग-अलग राग। गाने थे वो डिफरेंट रागा में है। जो राग क्या बोलते हैं उसको? डिफरेंट राग, तो कॉमन कैसे हो गया वो? तो सेम ही राग होंगे। ओके, विच राग? मेरे को दो ही पता है राग यार, अब मैं देश कैसे राग। बोलूं? एक हाँ, देश। करेक्ट, 10 पॉइंट्स। कौन सा राग? देश राग। देश। देश राग। मैं तो तीन ताल बोलने वाला था, मेरे को एक ही राग पता है, तीन तीन ताल। ताल ताल राग नहीं है वो, ताल है, राग नाम में थोड़ी ही है, ताल है ताल है। वो। मेरे को क्या पता, अपन बोलने का ऐसे त्रिताल या बट फिर गुड एक और है क्रैक, मेरे को पता है। गुड क्रैक गाड़े भाव। यही तुम्हारा ये है रूट कॉज। यू आर बीटलेस बिकॉज तुमने ताल को हमेशा राग समझा है। इसीलिए तुम बीटलेस हो। सदा तुमने ऐब देखा पुनर को न देखा। ओके रामपी, कनेक्शन क्वेश्चन फॉर यू। अरे तो वो है पहली वाली। अच्छा, पानी खत्म। ये सबसे आखिरी वाला क्या है? इसमें नाम दिख रहा है क्या? नाम दिख जाएगा तो अच्छा ही है। नहीं, नाम नहीं दिख रहा है मेरे को। एक्चुअली जो पीछे, उसके पीछे जो वो है ना, वो इज अ गुड क्लू। वंदे मातरम। Rampy, anything striking? So start from the first answer of the previous question, which was Des Rag. Or you can't, you know, it's Kavita Krishnamurti, वैसे तो सबको ही पता होगा। इसमें सब पता सबको ही है, लेकिन क्या है कनेक्शन वो नहीं पता है। लेफ्ट टू राइट जाओ प्लीज। हाँ, इसलिए मैंने कहा था ओपन योर माइंड। ज्यादा ही ओपन हो गया ये तो। मेरा वाइल्ड कैसे है कि वो कविता कृष्णमूर्ति सिंगिंग, ये कौन सा वो मिले सो मेरा तुम्हारा वो वाला है, दिस थिंग व्हिच वाज डायरेक्टेड बाय विद विनोद चोपड़ा and another Chopra directed DDLJ, and this happens to be the birthplace of Adolf Hitler, Switzerland में कहीं, what is that, Amhof something name is there where this guy was born. No, not even. I think the obviously DDLJ part is there, but all other connections are not there. Vipin? Kavita Krishnamurti sang a song in Desh Rag for a Viduvinath Chopra movie. I'm guessing it's मुन्ना भाई MBBS या गांधी जी वाला पिक्चर जो दूसरा मुन्ना भाई MBBS Part 2. That was directed by Irani. वो ठीक है, राजू ईरानी है उसमें, छोड़ो फिर, पास। Pintu? ये विधु विनोद चोपड़ा और इसका क्या, जो चोपड़ा इज द कनेक्शन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, उसको रामपी प्रोबेबली ने बोला। थर्ड वन। हाँ मालूम है, आई एम जस्ट टेकिंग इट फॉरवर्ड। ये तीसरा वाला स्विट्जरलैंड में शूट हुआ था, एंड
ऑब्वियसली कोई किसी हिटलर का तो ये पुतला लगाएगा नहीं। पीछे स्विस फ्लैग है एंड इज दैट मीन वहां पे इज दैट दिख नहीं रहा है क्या तुम लोग को इसमें? आई थॉट द नेम वाज विजिबल। नहीं दिख रहा है। नहीं, विजिबल नहीं है यार। इट्स होमी भाभा है क्या वो? यहूदी मेनन। यहूदी मेनन, ओके। कृष्ण मेनन के भाई है क्या? नहीं तो वो तो मेनहुई। he was a composer, right? Yehudi, yeah. So maybe he composed in an Indian rag at some point. No, I don't know. Okay. Maybe he did, but I don't know. That's not the connection. No Sherry? problem. मैं तो ये बोलने वाला था, ये डीडीएलजे जो होटल में होता है स्विट्जरलैंड में, वो है पीछे। डीडीएलजे का जो Actually, you're not far. If you can think a little more. एक वो जो सीन होता है डीडीएलजे का इन इन स्विट्जरलैंड इज that building behind Go, and no, not the building. I think so, but can you go left to right? हाँ, अगेन देशराग कविता, आई थिंक किसी ने ऑलरेडी बोला है कि कविता कृष्णमूर्ति sang in देशराग in a Vidhu Vinod Chopra movie. 1942, A Love Story. No, it wasn't maybe. Deshrag. Okay, fine, that's fine. 1942. 1942, A Love Story. उसका क्या डीडीएलजे कनेक्शन है? 1942 लव स्टोरी का क्या ही डीडीएलजे कनेक्शन हो सकता है? आरडी बर्मन है। So that kind of is what Chintu was saying. A little refined version of that would be the connection between Vidhu Vinod Chopra and DDLJ. Oh. प्रोडक्शन हाउस है सेम चोपड़ा ये for DDLJ and वो स्विट्जरलैंड वाला। No, I think I'll give you 5 points for kind of getting somewhat close. Got it? Going on the same lines कि ये कृष्णमूर्ति ने विधु विनोद चोपड़ा के लिए गाना गाया, आदित्य चोपड़ा ने ये डायरेक्ट किया, एंड ये स्विट्जरलैंड का सेटअप है, एंड द लास्ट पिक्चर इज सिग्निफाइंग स्विट्जरलैंड लोकेशन और शोइंग अ स्विट्जरलैंड लोकेशन। तूने वही बोला जो शेरी ने बोला, बस बिना वो करके बोला। That was an addition. कुछ ऐड नहीं किया तूने जो शेरनी ने बोला, तो शेरनी गाड़ी ने ऐसे करके इटालियन बोला है। The guy shot himself in the back 5 times and then jumped off the bridge. He committed a suicide. No, I don't think so. Sorry, you should not make jokes about that one anyway. I think it was Rampi's direct, no? नहीं, विपिन का डायरेक्ट, हाँ, रामपी का डायरेक्ट। So the answer is obviously Kavita Krishnamurti sang the Desh Rag in Baje Sargam. Remember Baje Sargam? उसमें all Bhimsen Joshi, Balamurali Krishnan, Bhupen Hazarika there. Baje Sargam, Mile Sur Mera Tumhara. तुमने Mile Sur Mera Tumhara था, the only woman in that who sang both Hindi and Tamil lyrics was Krishnamurti, and she got her first filmfare for Pyar Hua Chupke Se from 1942, which was directed by Vidhu Vinod Chopra, whose first cousin is Aditya Chopra. मैंने आदित्य चोपड़ा बोला, किसी ने नहीं बोला था आदित्य चोपड़ा, कुछ भी रहा ना, थोड़ा बोला चोपड़ा, चिंटू ने भी बोला था। काड़े। Now if you see the hint was in the question itself, where if you see the वो एक scene है ना जिसमें बोलता है let's go to this church. So this shot is in this place called Sanen and Gestalt करके एक जगह है जहाँ पे यहूदी मेनन lived for quite some time. This bust is there, and the early Beck bakery जो पीछे दिख रहा है ना is there in जरा सा झूमलू में गाने में। हमको नहीं दिख रहा है वो, इतना छोटा पिक्चर झूम आउट कर दिया है। ठीक है,
So 5 Start points to is Sherni. start. So next direct is for Gade. Start Etymology. is where you'll find all the posh people going for skiing holidays. Yeah. Saif and Karina popularized in India. Start. वो हमेशा से Okay. posh लोगों के लिए रहा है. I also went there. Maximum Etymology of which phrase is discussed here. A modern folk etymology holds that the phrase is derived from the maximum width of a stick allowed for wife beating under English common law, but no such law ever existed. This is like an urban legend. Brewmasters of old often tested the temperature of a batch of beer by dipping X in the brew, their long experience telling them how well the beer was brewing. Miller's Girni Kamgar in medieval times judged the fineness of the flour by rubbing it between dash and X. I've deliberately put dash because it would have been a giveaway to decide whether to regrind it. The word X is a part of the phrase. What phrase are we talking about? All of us have heard it many times. We have used it also probably a lot. Miller, so maximum width of a stick. Oh, okay. Wife beating. I think I can guess this one. Gade bhau, gade bhau, gade bhau. गाड़े रे गाड़े गुंडेर पे तेरी बोल रहा है काका. Hand. Sorry? Hand. No. Hand. No, not. Rampi? क्या बोला गाड़े? Hand. Hand. And हस्त हस्त मैं हस्त मैं हस्त मैं. तो मैं. Rampi. Pass. In some sense, Gade was not far from the answer actually. Yeah. आगे Vipin? मत बोलो कुछ. मेरे को भी ज्ञात था, I guess. Between dash by dash and hand. Is it foot? No. You're Is farther it thumb? from that. Rule of thumb? Correct. Rule of That's thumb? the right answer. Beautiful. After मैं भी वही बोलने वाला था. Rule of thumb. So you take the flower and pinch it in your finger and मैं- thumb. So that's Thumb. why मैंने you have hand. width की जगह मैं उसको एनालाइज कर रहा था लेंथ ऑफ स्टिक. Right. Because you're always Gade bhau worried about the length of the stick. Length. Length is what worries most. Okay, so हाँ लाख रुपए की बात है. connection round, connection question. So 10 points to Chintu. Connection to Sherry. मेरे को. In अरे this कुछ दिखे तो case, सही. you may not go left to right in this one. There is no need to go left to right. Rule of thumb. Rule of. अरे ठीक है कुछ दिखे तो सही. सामने तो है पीटी उषा, सचिन, विराट, विजेंदर. Vijender Singh. I know all these people break their thumb at some point in their career. मैंने ये चकल्लस पॉइंट के लिए यही सोचा था कि मैं बोलूंगा all of them have had a thumb injury. I guess. I don't know. Yeah, Gade Bhau. What could be other connection of thumb and sport?
Oh, Not a very direct connection like an injury or something. रुक जाओ. Maybe. Yeah, I think Chintu's got it. No, pass. Okay, Rampi. I don't know. थम से तो कनेक्ट नहीं हो रहा है, but they all have won some Rajiv Khel Ratna award or Arjuna award or something. I'm guessing that they all have, but that is not the connection. Okay. Pin? There is no story here. It's not a left to right, this one. This, I don't know. पता नहीं. बस. Pintu? अरे यार, अब रामपी ने मेरे को है ना कंफ्यूज कर दिया अवार्ड बोल के. बिकॉज आई वाज साला, एक तो थम्स अप हो सकता है, एकलव्य अवार्ड हो सकता है. Think harder. You're almost there. अरे अभी wait, I just thought. You got it, Gade? ये थम्स अप की एड में आए हैं सब. They've been brand ambassadors for thumbs up. Sachin has never been thumbs up. सचिन नहीं है कभी. Sachin, Pepsi. None of them have actually been thumbs up ad. None of them actually. Okay. अच्छा मायला, then it must be the other one. Right, this is Sherry's direct था ना ये. Hmm. Gade, you almost Get- guessed? नहीं. That would have been my guess. Yes. Oh, okay. एकलव्य award. No. So that's why I was saying, just think more. It was not Eklavya award. It was Dronacharya award. अच्छा मायला, hit. Ooh, fuck. So thumb was what Dronacharya allegedly took away from Ekalavya. Dronacharya हाँ. is award given to coaches. PT Usha's coach Om Nambiar, Sachin's coach Ramakant Asrekar, Rajkumar Sharma Virat, and They've all won It's not an Dronacharya. exhaustive list. But All actually are एक Dronacharya. सरकार का एक एकलव्य सही. अवार्ड भी है. Eklavya award is also there, yes. Hmm. But this is, the connection was Dronacharya award. So that's why I was दो saying, चार point दे दो ना. yeah, you're there. And you दो went चार on point thumbs दे up. दो ना. अरे दो चार एकलव्य point अवार्ड के लिए क्या सचिन तेंदुलकर अगर- को अंगूठा देंगे क्या गिफ्ट में? ये सब चलो. गांड उंगल करते हैं सब अपोजिशन में. So this अरे is दो चार तो दे दो राम्या. ठीक है, 4 point दे दो चिंटू को. वाह. At least he said something. एकलव्य तो आया उसके मुंह से, कुछ तो निकला. I was expecting Rampi to figure this one out, but he's just zoned out, I think, looks like to me. Next. Okay, Sherni, this should be up your alley. Wake Up Dash is a progressive rock album by X, released on 27 November 2015. Is a modified excerpt of its review published in Rolling Stones in December 2015. His message of peace and economic justice has been an inspiration to millions of people all over the world. How is his music? Infallible. Wake Up sets his speeches and prayers in Spanish, Italian, Portuguese, English to pop, rock, and classical compositions performed by Italian session musicians, several with roots in the country's 70s rock scene. You can hear that influence in the tubular synth noodling that opens Anuncio Vobis Gaudium Magnum. Other songs nod to Dash South American background. Dash is South American background. The only song in English, Wake Up, Go Forward, is the most rocking, riding, heraldic metal riffs and fire-tongue solo into a sermon on activism. Okay, no. Usually the music, some of which is quite lovely, la 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 la. I think if you've got the answer, I don't need to read it. But most of the Pope clues I've Francis already का read. है ये album. Correct. Pope Francis का album. That's right. Pope Francis. Correct answer. Okay, 10 points to Sherni. Connection question to Gade Bhau. अबे वो पहला पिक्चर इतना ये The blurry pictures, I'll tell you, it's a scene from Friends.
There's an अच्छा। episode मेरे where को वो Joey is- रेचल लगी, but okay. so it's Chandler sitting, उसके बगल में that old lady in the pink dress is the episode where Joey's grandma is visiting and he's supposed to be on a TV show and they cut him out. That episode. नहीं, क्या बात है, सिर्फ पैर देख के तुमने बोल दिया कि मेरे को रेचल लगी वो, क्या नहीं बात उसके है। बाल रेचल पीछे बैठी पैर है। कहाँ बैठी है रेचल वो। खड़ी है, बैठी बैठी वाली है। नहीं है। अच्छा, हमारा मेरे ध्यान वो सिर्फ जो पैरों पे क्यों गया आम पे चिंटू? अब मैं और आर्मरेस्ट पे किधर जो से बैठी है, देखूंगा? आर्मरेस्ट पे जो बैठी है वो। जो रेचल है वो उसके पैर नहीं है उसके। वो रेचल नहीं है वो। Okay. और क्या? Scared. पोप फ्रांसिस और फ्रेंड्स का क्या कनेक्शन हो सकता है? ये is वो एपिसोड याद करेगा तो आ जाएगा। चल वो नहीं भी याद हो, if you can is move is forward. Pope expected to appear on that TV show जहाँ पे उसको निकाल दिया जाता है? No. ये टेस्ला और ये लास्ट वाला तो मेरे ख्याल से इज द राइट हैंड Cool. magnetic fields law, that is the connection, नहीं? Okay. So that's the easy part. Obviously, सबने engineering करा है तो इतना तो पता ही होगा। रामपी? पता नहीं, वो पोप इज कनेक्टेड टू इटली एंड जोई's family is Italian in France. I mean, मतलब जोई is of Italian descent. Then I don't know, this guy is some Italian fellow connected. I don't know, pass. Okay. Bipin? Pope Francis. छोड़ दे उसको. You have guessed that it's Friends. You know which episode it is. You can move forward from there. Okay. फिर ये दूसरा वाला जो बंदा है, ये उसके कोई साथ क्या कनेक्शन है? फ्रेंड्स के फोटो का उसके साथ क्या कनेक्शन है? Therefore उसके साथ क्या है? उसके साथ क्या? वो फ्रेंड्स के उस एपिसोड में जो सीरियल में जोई आने वाला रहता है, वो बंदा उसमें लीड रहता है। ही that might be some Nicholas guy. No. चिंटू? यार वो जो सेकंड वाला है वो तो डेविड बॉवी जैसा लग रहा है मेरे को। That is He is वो David डेविड Bowie. बॉवी David ही Bowie. है। तो डेविड बॉवी का गाना वो उसमें बज रहा है, या डेविड बॉवी का गाने, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन फ्रेंड्स एंड डेविड बॉवी का गाना, Okay. बट डेविड बॉवी को भैंचो टेस्ला के साथ कैसे कनेक्ट करे? Oh, okay. Maybe one of his most famous songs is something called Magnetic or Magnetism or something like that, which connects him to Tesla, which is a measure of magnetic fields, and right hand rule is. I'll give you Joey. 5 points for getting to David Bowie and therefore. Sherni, can you improve that? हाँ, I think so. Joey Tribbiani is Joseph Francis Tribbiani. That is the connection to Pope Francis. David Bowie. Anyway, but good, fine. David Bowie का इसने बताया. David Bowie played Nikolai Tesla in कौन सा मूवी यार, वो मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, but he Fine, played that's okay. Nikola That's Tesla correct. and He played Nikola Tesla. Good. Tesla. I'll give 15 points to Sherni and 5 to Chintu. So this is the scene where Joey's scene is going to come. He runs out of the room, gets a tape, and then to distract his grandma, he says, "Grandma, look, the Pope." And she looks back, and Chandler says, "Oh, why am I looking?" Whatever. And then he pops in the tape, and they see his scene, which he's just shot. And then as soon as the scene ends, there is Chandler's home video comes on, and he's singing Space Oddity, Ground Control to Major Tom, which is a song by David Bowie, who played Nikola Tesla in The Prestige. The Prestige, movie. Prestige, correct. And Tesla, as you know, is the unit for magnetic flux density. Okay, I hope you like this question. one. I was सही question. all right. सारे this ही सही is, to Gade Bhau. X was first sold by Block Drug, a New York-based company established in 1907 by pharmacist Alexander Block. It contains potassium nitrate, in which the potassium ion hyperpolarizes the nerve and stops it from firing.
The nerve impulses are thus desensitized and there is no pain. What are we talking about? Potassium nitrate. ये तुम्हारे यहाँ चलता है कि नहीं पता नहीं, इंडिया में तो अभी बहुत हिट हो गया है. Contains potassium nitrate and with the hyperpolarizes the nerve. If nobody gets, I have a ये very बता सकते हो क्या कि ये टॉपिकल है या इंटरनल मेडिसिन है? I can't answer that. नहीं मत बताना. Is this something to do with toothache and pain Go on, associated right with track. dental क्या होएगा? It contains, so it's toothpaste, some toothpaste which has potassium nitrate. You have an answer? Absolutely the right track. Or you'll kick yourself for not knowing this. अब इसके बाद तो guessable हो गया, I think. Mint toothpaste. नहीं. अबे नाम बोल. गाड़े भाव. रम्पी. You full assist to गाड़े Sensodyne है क्या? Correct answer. वही है. अबे गाड़े नाम गांडू. बोलना कुछ भी रैंडम, बहुत सब कुछ बता दिया उसके बारे में, बिना सिर्फ नाम नहीं बता. I was like, come on, just say the name. Anyway. Point should go to गाड़े only. No, I think because toothpaste was easy to guess, I think Sensodyne was the main Such thing. are the rules of this quiz. They But will ठीक है, not we'll be give messed 2 with. to Gade and 8 to Rampi. Dotho. धन्यवाद मालक. Malak. Okay. Question number 14, connection to Bipin. Left to right है ये वाला. ये तो entertainment zone में ही है, by the way. So Sensodyne. Paste for tooth and ये कुछ हाइड किया है क्या तूने इस पिक्चर पे? हाँ, brand name hide किया है. यार देख वो सेंसोडाइन टूथपेस्ट से इधर क्या रहा है पता नहीं, बट एक आई एम थिंकिंग मेसवाक है, डाबर रेड है, मेसवाक रेड है, कौन सा है ये? कोलगेट नहीं है. पता है तुमको, सब पता है, चारों फोटो पता है, बस तुमको दिमाग लगा के कनेक्ट करने का है. मैं स्टोरी तो मैं बता ऐसे, मतलब देख ये तो जो अमिताभ बच्चन है वो एक रहीन ईर एक रहीन बीर एक रहीन फट्टे वाला वो गाना है, ठीक है? दैट इज द सॉन्ग दैट उसमें वो इधर वाला पिंक पैंथर है एंड पिंक पैंथर वाज प्लेड बाय स्टीव मार्टिन. सो आई हैव दैट थिंग फिगर्ड आउट. मैं सेंसोडाइन और इसको रेड को वो उनका नहीं कनेक्ट कर पा रहा हूं, बट आई नो दैट सॉन्ग. सबसे सिंपल कनेक्शन सोचो वो वाला. सेम कंपनी है क्या दोनों की, सेंसोडाइन और रेड ब्रांड? वो ब्रांड की नहीं. सेंसोडाइन कनेक्टेड नहीं है क्या उससे? अरे सेंसोडाइन कनेक्ट होना है ना. क्यों, क्या है वो दोनों के, क्या है? टूथपेस्ट है, दोनों टूथपेस्ट है. करेक्ट, दैट्स इनफ, गो फॉरवर्ड. हाँ टूथपेस्ट एक रहीन ईर एक रहीन बीर एक रहीन फट्टे, उसमें तो ये वाला टूथपेस्ट कौन सा है? अरे यार ये डाबर है, मेड दिख नहीं रहा है ठीक से. तो जानवर छुपाया तो दिखेगा कैसे? तो दिखा के अगर बोलना रहता तो वो तो फिर तो लिटरेसी टेस्ट हो गया.
वो तो हमको मालूम है, तुम कभी कभी दैट तुम्हारा इज तो ऑल्सो, फालतू। साले तेरे को ये गाना बीच में का पता है क्या? एक रहे नीर बीर फट्टे। अरे वो अमिताभ बच्चन वाला बहुत पहले आया था, एक ये वाले के रहे बारे में मैंने एक अपने रहे ग्रुप पे तुम लोग को बहुत बताया भी है, और मैंने ट्वीट भी किया था इसके बारे में। हम और ट्विटर चिंटू पे के नहीं कलर है। ब्लाइंडेडनेस के लिए इसलिए वो रेड लिखा भी है वहां पे, RED करके। चलो ये डाबर रेड है, डाबर लाल। करेक्ट। हम्म। आगे बढ़ो, फोटो पहचानने के कोई पॉइंट नहीं है। नहीं, डाबर लाल दंत मंजन, डाबर लाल से दंत मंजन आएगा। इकरहीन बीर इरबीर फट्टे में वो दंत मंजन का कुछ इस्तेमाल किया होगा बोलेगा। क्या है वो कनेक्शन? वही डाबर का दंत मंजन हमने नहीं। ओके, वो बोलता है नहीं, आई मीन ओके ठीक है, छोड़ रॉन्ग दे आंसर। अब। चिंटू। मेरे को तो मालूम भी नहीं था, एक राइट में कौन है, आई बीच थिंक वाला। 5 points टू बिपिन एनीवे बिकॉज ही काइंड ऑफ अटेम्प्टेड, सारे तो आ ही गए उसको। सो एक रहन एक बीर, एक रहन बीर की जो ट्यून है वो पिंक पैंथर से चुराई हुई है। और कनेक्ट्स, हाँ पिंक पैंथर टाणो टाणो आई नो, बट उसमें कोई और गाना होगा ना जिसपे जिसकी ट्यून चुराई है। ओ, हिंदी पिंक पैंथर में अमिताभ बच्चन ने आवाज दी है। नहीं। केरनी। अमिताभ बच्चन पहले आ गया, पिंक पैंथर से पहले ही अमिताभ बच्चन आ गया। और देसी आंसर है उसका। केरनी। हम्म। रामपी से गंदा मुंह तो मत बनाओ यार। बगीरा, बगीरा होगा उसका आंसर, पैंथर इज बगीरा। पिंक पैंथर का क्या रामपी आज कनेक्शन? आज किसी मूड में नहीं है टू एंगेज। अरे रामपी, वैसे बहुत दिनों के तुमने अपने नाक के बाल नहीं दिखाए यार। आज बराबर है किसी भी कि नहीं? मूड में नहीं है वो। ये आजकल क्या? पट्टू, टेबल पे बैठते हैं ना। जो हाँ। जो लड़का उस फोटो में वो डांस भी कर रहा है। नहीं। नहीं, पास। गाड़े भाव। ये टॉक गोइंग ऑन द सेम लाइंस एज चिंटू, जो बोला कि बगीरा का आवाज इसने दिया था, नहीं अमिताभ बच्चन ने। नहीं नहीं। रामपी। अमिताभ ने डाबर का भी ऐड किया है। हाँ आ, करेक्ट। और अमिताभ की वो बहू ऐश्वर्या राय है, वो वाज इन पिंक पैंथर। पिंक पैंथर इज स्टीव मार्टिन। Okay, I that is give a you 10 much points, better but that connection. is the better connection, not the actual what we are looking for. But 10 points to Rampi for that. So, okay, so toothpaste, Dabur Lal is the toothpaste. जिसकी ad का गाना मैंने तुम लोग को बताया था is pretty awesome and please watch it. And which was based on Irbir Pate. O Dabur Lal करे, तुमको भेजा था मैंने तुम लोग को, I think, I don't know if you remember. Amitabh's son owns Jaipur Pink Panthers kabaddi team. Oh shit. And Pink Panther is the movie in which Steve Martin has played Inspector Jack Clouseau. Jack Clouseau. Clouseau. Jack Clouseau. How is the weather? May I have a hamburger? I would like to have a hamburger. Hamburger. Okay, this one is to इसमें बिपिन को कोई पॉइंट मिले क्या? बिपिन को 5 5 देने और उसने रामपी को दिए, 10। पहले दे दिए, तुम लिखते नहीं हो इसलिए मैं हारता हूँ। अब ये मेरा आएगा। ये चिंटू का है। The logo of this brand was chosen to have an elephant, which signifies steadiness and strength. For some, elephant has an auspicious significance also, obviously, Ganesha. The hope was that the logo using elephant will bestow luck and success, and how much it did. The logo caught on so much that in rural heartland, this product is still known as Hathi Wala Cream. Which brand? ये अपने नागपुर साउथ इंडिया साइड नहीं है ज्यादा, नॉर्थ एंड ईस्ट साइड, ईस्ट especially. I think I know. And cream here is cream which you apply to your skin. मैं अपनी नॉर्थ इंडियन वाइफ से पूछता हूँ ना। अरे ओ अरे भगवान, स्वाति, भगवान। तुम्हारे यूपी में ऐसे कुछ होता है क्या, हाथी वाला क्रीम?
हाथी वाला, जिसपे हाथी का एम्बलम होता है। ये फोन फ्रेंड ऐसे अलाउड है क्या? ये क्या मेरे को है, ये मालूम है चीटिंग आंसर। है सरासर। नहीं, वो राम देशपांडे बोल रहा है कि ये महाराष्ट्र में इतना पॉपुलर नहीं है, बट नॉर्थ इंडिया में है। नॉर्थ यार ये ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ महाराष्ट्र एंड में भी यूज ईस्ट किया है यार राम्या। हम्म, नागपुर में तो यूज किया है शायद। किया है लोगों ने, बट उतना लोग पॉपुलर नहीं जितना ईस्ट में, स्पेशली सर्टन स्टेट, जो लोग पगले उस इस क्रीम के लिए। अरे बंगाल, अरे चुप तो बैठो। ये गोरा करने वाली क्रीम होगी। फेयर एंड लवली। हाँ वही नहीं आंसर है, बोल दे जल्दी बोल दे। नहीं नहीं हो नहीं, गया, फेयर एंड कितना लवली नहीं। फोन फ्रेंड करोगे? अबे जल्दी फोन बोलो। फ्रेंड करके पास अरे करूंगा। एक मिनट रुको ना यार, फेयर एंड लवली के सिवा और कोई फेमस अगर स्वाति, तुमने हाय स्वाति का हाय, आंसर यूज स्वाति, किया, हाय हाय, स्वाति, फेयर एंड हाय तेरे को लवली आंसर हाय। मालूम है वैसे? साउथ इंडिया में बहुत पॉपुलर है। अच्छा तो ऐसे लफंगे फ्रेंड से हेल्प ले रहे हो तो मैं लफंगे लफंगों से लोग, हाय हाय, गुंडागर्दी डाउन डाउन। यूपी के लफंगे। विपिन, लुक एट योरसेल्फ। तुमको अगर कोई भी सड़क पे देखेगा तुमको लफंगा ही बोलेगा। लुक एट योरसेल्फ। तुम ब्लू कलर का टैंक टॉप पहने हो फुल दाढ़ी के साथ। तो आई वेयर इट प्राउडली, एटलीस्ट पीछे छुप के तो आंसर नहीं देता। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। इट्स अ गुड थिंग यू आर मैरिड, विपिन। आई नो, या इट इज अ गुड थिंग। you have a final answer? यार मैंने इसका लोगो भी देखा है, नीले कलर का लोगो होता है इसका, यस, ऐसे नीला तेरे ओवल को में पता है, होता यही मेरे लिए को बहुत अच्छा लगा। है, ओवल में रहता 10 है। पॉइंट दे दो नीला बोलने के लिए। रहता है। नीला बोलने के लिए 10 पॉइंट दे दो उसको। अबे तू ठहरना वे। तू तेरा ठहरना दिमाग बे। में कुछ आता है, लफंगे निकाल लोग। लेता है तू। चलो बेस्ट सोफ्रामाइसिन। no. चेन्नी, अब That's क्या right. बोरोलाइन एंटीसेप्टिक। बोरोलिन। yes, खुशबूदार एंटीसेप्टिक क्रीम क्रीम बोरोलिन। बोरोलिन, वही Correct. तो मैं बोल रहा था, कोई दूसरी क्रीम बताओ वो वाली। खुशबूदार बोरोलिन एंटीसेप्टिक ये क्रीम मेरी माँ की बोरोलिन। फेवरेट क्रीम है, हर ये चीज पे वो नागपुर में तो बोरोलिन बम्पर यूज लगाती थी। होता ही है। हाँ, और मेरी माँ बंगाली हर लोग, चीज पे बोरोलिन लगाती है। अभी भी हर लगाती थी, बंगाली हमको आदमी बचपन में लगाता हमको भी लगाती थी। हाँ, खुशबू, अरे सबकी महक आती है इसकी, जबरदस्त महक आती है इसकी, खास एकदम। है। There is not a single बोरोलिन। Bengali who will not travel without Borolin, basically. यप, ट्रू। Okay, गाड़े भाव कनेक्शन करो। अरे वाह, अरे वाह। बहुत ही खतरनाक लेवल का कनेक्शन, मेरे को खुद को ही मजा आया है बनाने में। बोरोलिन। तो दिस कनेक्शन, थिंक ऑफ इट इज लाइक व्हेन यू आर विकी सर्फिंग ना, एक विकी पे क्लिक मारा, वो कहीं और गया, फिर वहां से क्लिक मारा, कहीं और गया, ऐसे ऐसे करके आप जाते रहते ना, उस टाइप का कनेक्शन। ओके, इसका कनेक्शन बता सकते हैं? बहुत बढ़िया। दो तो लेकिन पहले बता ही सकते हैं, 5 पॉइंट तो आ जाएंगे। गाड़े भाव का क्वेश्चन नहीं है। हाँ, मैं सोच रहा हूँ। गाड़ी के बाद रामपी भी है ना, रामपी को भी आएगा, और क्या है। रामपी जोन्ड आउट है, सोचते कि दिमाग में वो दिमाग नहीं लगा रहे हो आज, उनको और लेकिन अत्यंत बोरोलिन से क्या question कनेक्ट अच्छे है? लगते हैं। वो तो सवाल है, बोरोलिन। शुरू करो ना उससे। बोरोलिन इज अ एंटीसेप्टिक क्रीम, और वो मुन्ना भाई एमबीबीएस है, तो देयर इज अ डॉक्टर और एंटीसेप्टिक और एमबीबीएस का कनेक्शन है। नहीं, उससे बहुत ज्यादा डायरेक्ट कनेक्शन है। जस्ट थिंक ऑफ बोरोलिन, का नाम ही क्यों होगा बोरोलिन। You have a better answer, otherwise we'll move, because you already नहीं, gave पास an पास पास। आई थिंक Rampy? बोरोलिन अभी तुमने बोला तो वो बोरिक एसिड का कुछ ये है, विच इज बोरिक, वो पाउडर जो यूज करते हैं कैरम खेलने के लिए। Correct. यस, ये मुन्ना भाई में वो रानी डालो बोलते रहता है, तो रानी इज क्वीन, क्वीन इज दिस गाय रामी मलिक who played ये गए मेरे 5 पॉइंट। Nice. क्वीन, देन पास। Okay, विपिन। मेरे 5 पॉइंट गए ऑलरेडी। अभी वो बोरोलिन से बोरिक एसिड आया, रानी तो पप्पा नहीं छे करके दिख रहा, रानी तो पप्पा नहीं करके रानी से उधर वो So रामी if you मलिक look carefully into the fourth question, you should be able to read it. जो यार, नहीं white लिख रहा ना बाबा, तुमने इतना छोटा करके रखे ला है। क्वालिटी, पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। कुछ पढ़ा के सुनाओ तुम ही हमको। Okay, मैं पढ़ा के सुनाता। Let's put broccoli in the White House again. लेट्स पुट ब्रोकोली इन द व्हाइट हाउस अगेन। ओके, ये मैं बताता। विपिन पास हो गया ना विपिन से? नहीं हुआ ना, अभी मैंने दिया ही पास कहा कर मैंने।
Let's put broccoli in the White House again. ठीक है, पास कर दो, ले चिंटू। तो ये जो रामी भाऊ है, इनका जेम्स बॉन्ड से कनेक्शन है। ये बीच वाली थर्ड लेडी जो है वो ब्रोकली की वो हेड है, विच इज द फैमिली दैट ओन्स द राइट्स फॉर जेम्स बॉन्ड मूवीज। और ये Yes. चेल्सी बाई है, चेल्सी बाई नहीं, चेल्सी बाई की माँ, क्लिंटन बाई है ये। क्या नाम है उसका? हिलरी Hillary हिलरी बाई Clinton. है। हाँ, और वो ब्रोकली और ब्रोकली का कनेक्शन है वो। वो ब्रोकली क्यों बोल रही हो? हाँ, Why is it that let's put broccoli back in the White House again? उसके आगे का कनेक्शन पूछ रहे हो अब तुम मेरे से। ब्रोकली बाई ठीक है, 10 points to Rampi and 10 to Chintu. So correct. Basically borolin, boric acid. Boric acid is used on carom. Carom का सीन में बोलता है रानी तो पापानी। तो रानी is queen. Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury is played by Rami Malek, who played the villain in No Time to Die, James Bond movie, which is produced by Barbara Broccoli, whose father Albert Broccoli was the original producer for James Bond. George H.W. Bush had said that he hates broccoli, which was then used by Hillary Clinton and Tipper Gore. So, other one is the wife of Al Gore. During campaign, गली गली में शोर है, Al Gore चोर है। Let's put broccoli back in the White House again. So, this was during the Bill Clinton's campaign. वाह, सही है। Next, direct to Sherni. वैसे हिलरी भी बुरी नहीं दिखती राजा। Hey, Bhagwan. This company has a logo. मतलब अपने क्या? This company has a logo where a cat is depicted jumping through the loop of time. इसके This हिंट is विंट मत indicating देना, long वैसे life. कोई ना कोई गेस कर ही लेगा। किसका है भी ये? Sherni. शेरनी उसको का। हिंट चाहिए भी नहीं होगा इसका। Which company is this? अरे क्या क्वेश्चन भी है क्या ये राजा? वो एवर रेडी। Correct. 10 points to Sherni. क्वेश्चन भी है क्या ये? अरे नहीं है, अब ठीक है ना, एक आ गया तो उछल रहे, 20 नहीं आया। उसको एक नहीं, सब आते हैं उसको। तुम सचिन तेंदुलकर को फुलटा डालते हो। गाड़े भाव कनेक्शन। तो There ये are तो पहला 4 pictures वाला actually. ये चिंटू को आना चाहिए, नहीं तो गांड है। पहला वाला तो बैटरी है। अरे कैसे गांडू हो तुम? ये मतलब नहीं है पूरी स्टोरी तो चिंटू। शायद मैं बता सकूं, लेकिन कैसे गांडू हो राम देशपांडे को? तो ये तो एवर रेडी और ड्यूरासेल बैटरी का कनेक्शन है पहला वाला। फिर ड्यूरासेल और ये एक ही पिक्चर है, वॉरेन बफे और बर्कशायर हैथवे इज वन पिक्चर। अच्छा, तो ड्यूरासेल और वॉरेन बफे, ड्यूरासेल फिट। did Berkshire Hathaway save Duracell from bankruptcy, something like that? Go on. Berkshire Hathaway. No, that's it. Okay, I'll give you 5 points. Rampi? पता नहीं यार, I can only recognize them, but connection I don't know. Pass. Vipin? यार बैटरी कनेक्शन तो उसने बोला, ठीक है। देन वॉरेन बफे सम ओन्स ड्यूरासेल में भी, ठीक है। Correct. Berkshire वॉरेन बफे एंड हाँ, Berkshire Hathaway bought it from P&G. okay. Then Procter and Gamble. If you don't know the guy, he's Indian guy by the way. नहीं, रुक जाओ। कुछ तुमने इतना अनफेयर क्वेश्चन अगर बनाया है तो मेरे को उसका फायदा भी तो उठाने दो। हाँ, बस उधर तक मैं रुक गया, इतना ही मुझे कनेक्ट पता है। ठीक है, 5 points to Vipin also. Chintu. ओके, ये सर Berkshire Hathaway owns Duracell
Warren Buffett is the CEO of Berkshire Hathaway. Rajat Gupta used to be the CEO, the infamous CEO of McKinsey. McKinsey is a consulting company which connects it to partners in performance, which is the last one, which is What is the also. connection of Berkshire Hathaway and Rajat Gupta? More direct question other than. Oh, I thought the connection is between Warren Buffett and. Yeah, whatever. Rajat Gupta. Warren Buffett, Berkshire Hathaway, same thing. हाँ, I know, but I thought कि you're saying कि. ओ इसलिए तो बोला ये चिंटू को नहीं आया तो गांड है, सही में गांड है ये तो अगर नहीं आता। मेरे को ये लगा कि तुमने ये बोला कि Berkshire Hathaway का CEO Warren Buffett. There's a very McKinsey का specific CEO. incident I'm looking for Berkshire Hathaway and Rajat Gupta. Come on, you know it. What happened which caused something? Oh, ये वो जो जिस केस में ये अंदर हुआ था, it was वो जब Goldman Sachs के board meeting चल रही थी, उसमें the discussion was about Yes. Berkshire Hathaway's investment. Correct. Yeah. Correct. इस केस में अंदर हुआ था ये. So 10 points to Chintu also. Good. So basically, a refined answer is that Eveready is owned by Energizer, whose mascot is an Energizer bunny, which was actually a parody of the Duracell bunny. And Duracell is a company which is owned by Berkshire Hathaway, which had invested $5 billion in Goldman Sachs, which was allegedly an insider info leaked by Rajat Gupta right after the board meeting, causing him to be convicted, even though he was an ex-MD of McKinsey, which employed Chintu, who now works at The last one is the logo of Partners in Performance. Okay, Sherni, you're direct. Which globally known brand started out in 1938 after the Brazilian government's initiative to preserve the substantial surplus harvest of something Brazil is famous for? Ass. That's your answer, Vipin. I'll already count it as a Vipin answer. So from Rampi will directly go to. I don't know about Brazil's surplus production of hash. I have no idea about that. Brazil famous for Amazonian forest में coffee. इतना पुराना कौन सा कॉफी हो सकता है? Guess है Nescafe. Correct. Nescafe is the right answer. 10 points to Sherni. Okay, Gade Bhav के लिए connections. Left to right. कैफे, मैगी, उसके बाद क्या पिछले वाले में जैसे एक लोगो डाला था ना जिसका कनेक्शन इस कॉल में एक जन है उसके साथ है, वैसे ही इस वाले में भी है. इसी में मस्ती कर रहा था मैं. कैफे और मैगी. ये दोनों एक ही कंपनी बनाती है, नेस्ले. करेक्ट. ठीक है. बीच वाला क्या है, क्या चीज ये लोगो? मैगी और लोगो. फॉरेस्ट कम. नहीं, that's it. Okay. Rampi. किसी को पता है क्या ये लोगो क्या है? नहीं ना, मैंने ये सोचा होप किया था कि तुम में से कोई एक बता देगा कि लोगो क्या है. नहीं, किसी को नहीं पता है क्या लोगो क्या है, तो मैं बता देता हूँ लोगो क्या है. हाँ वही लोगो बता दे. पता हमको तो. मेरे को पता है तुमको विपिन? नहीं, मेरे को नहीं पता है. It's Snapdeal. हाँ, Snapdeal. मैं एक Snapdeal. ओके. अच्छा, तो ये फिर ये मैगी और स्नैपडील में ये होगा कि जैसे मैगी 2 मिनट के अंदर खाना बनता है, वैसे स्नैपडील भी 2 मिनट के अंदर नहीं, बट वेरी फास्ट आपको डील देता है. नहीं. रामपी. Snapdeal. What did Maggie become famous for in the middle? Infamous rather.
Now, what could Snapdeal have a connection with that? And then obviously अरे you're seeing ये Tom तूने Hanks. बताया था यार. Now I know. Can I give answer? No. ये सब हो जाने के बाद आन दे, फिर अगर तू देता तो 5 पॉइंट दे सकते हैं. should have guessed मैगी that. का कुछ वो MSG से कुछ था ना, MSG, but I can't connect it to Snapdeal. But then that also connects to Forrest Gump, which I don't know. Forrest Gump and Bruce Springsteen, probably it is कि वो जो क्या, he always thinks he says he shouldn't have won the best film. No. That No, wrong track है Rampy, sorry. okay, something with Vipin? yeah. Maggie noodles became infamous for कुछ addictive elements डाल रहे थे उसमें. मैगी 2 मिनट रुक सकते हैं सर के बल रुक सकते हैं. मम्मी बड़ी गजब की भूख लगी. So मैगी बीच में बैन हो गया था ना, वो मैगी was pulled off the shelves तब. So Correct. that was the time when Patanjali noodles came to significance and all that. लेकिन मैगी was pulled off the shelves for some reason. मेरे को नहीं पता, शायद अजीनोमोटो डाल रहे होंगे, कुछ MSG डाल रहे होंगे उसमें कुछ. तो पहले से ही था. Snapdeal का क्या कनेक्शन है उसके साथ? तो I think it is like the same way Maggi was monopolizing the noodle market, Snapdeal was monopolizing the e-commerce market in India. No. So नहीं यार. Okay, Chintu. I'm just So something maybe that we take for granted now was the first time it happened, when that's the connection with Snapdeal. ये रामा ने I think इसका explanation दिया था. Explanation है whatever. oh Details दी. wow nice. तो ये आई थिंक फिर उसके बाद जो रीलॉन्च हुआ था उसके साथ कोई कनेक्शन होगा स्नैपडील का, कि भाई स्नैपडील वाज द व्हीकल दैट मैगी यूज्ड, कि भाई नॉट भक से मिलेगा तुमको. Perfect. पर उसका फॉरेस्ट गम से क्या लेना देना? I mean, that was the first time Maggi was launched online. Okay. Now it's ubiquitous, basically. Everybody, you can get everything online. But 2015 May, it was not common to have FMCG stuff or grocery stuff being sold online. Yeah. But what is the connection between Snapdeal and Forrest Gump? Yes, think about it. ये मेरे को शायद मालूम है. Maybe there is a मैं connection between. एक मिनट रुको ना, एक मिनट. मैं बोलता ना. अरे रुको ना, मेरे पीछे हो ना तुमसे आगे निकल चुका है ना क्वेश्चन. भाई तो ठहरना दे. तू ठहरना बे. इसका ये लाल सिंह चड्ढा के साथ कोई कनेक्शन होना चाहिए. लाल सिंह चड्ढा and Snapdeal are connected. Lal Singh Chadda is a remake of Forrest Gump. How is Lal Singh Chadda connected to Snapdeal? How would because Snapdeal तो बंद हो चुका था ना जब लाल सिंह चड्ढा आया. नहीं Snapdeal चालू है, अभी भी चालू है. अच्छा, Snapdeal अभी भी चालू है क्या? Okay. खा रहे क्या रामा की नौकरी खा रहे क्या? मैंने लाल सिंह चड्ढा देखी नहीं है. Maybe it appears in लाल सिंह चड्ढा movie. Snapdeal यानी उसका product placement है in लाल सिंह चड्ढा maybe. No. I don't know. And then Bruce Springsteen का गाना appears on the soundtrack of Forrest Gump. No. Does it? No, I don't think so. I'm just guessing. इतना कॉन्फिडेंटली जवाब देने का कि क्यों भी क्वेश्चन No, I know man. वो भी एक स्किल है. एंथ्रोपोजेनिक है वो. अरे बाबा, मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ. ये आधे टाइम मैं वही करता हूँ, मैं बकवास करता हूँ. Puma pulled out of my arse. But with confidence. हम Puma करते हैं. Can you improve on Chintu's answer? Chintu gets 10 anyway. Lal Singh Chadda was produced by वो क्या नाम है उनके फाउंडर्स का कोई? No. रोहित बंसल. No. वो तो फ्लिपकार्ट वाले हैं बंसल. And Snapdeal का भी Snapdeal का भी है. Forrest Gump and ये born in the USA. Forrest Gump was born in the USA. No.
Okay, I'll give the answer. So Chintu को 10 point दे देते हैं because he figured the Snapdeal and Maggie and this connection. आमिर So खान कनेक्शन है क्या? yes, correct. So Yeah. Nescafe is owned by Nestle, which also owns the brand Maggie 2-minute noodles, which was banned for a short while in India and then was relaunched in 2015 online on Snapdeal. Whose ambassador then was Amir Khan. If you know, the whole controversy had happened when Amir Khan had said that he doesn't feel safe in India, or his wife says so. And then people had taken their ire out on Snapdeal. They started uninstalling Snapdeal and whatnot. I was there at that point. Who remade Forrest Gump as Lal Singh Chadda, which had Tom Hanks, who had got previous year had got the Oscar for Philadelphia, which was the song by Bruce Springsteen, for which also Bruce Springsteen got an Oscar. That's the connection. Cool. Okay. Yes. This is direct to. Who is this direct to? मेरे के लिए होगा हाँ, चिंटू you- ये कनेक्शन चिंटू सारे कनेक्ट और वो भी नॉट फुल कनेक्ट सारे 10 पॉइंट if he maintains a record of winning all my quizzes, I made it easy for him by putting his company's logo in a question. hypothetical pattern is an example of what? Everybody has seen. I think we discussed it also once somewhere. If I'm not mistaken. Hypothetical pattern. ये रस्सी क्यों है on the plane? What is that? ऐसा वो कुछ नहीं. पुराने planes में होती थी. Ignore that. हाँ, होता था वो पहले. That was for extra stability of the tail fins. No, the tail. वो नहीं, extra stability नहीं. that's Sorry, not it was how the really mechanically anything to do with actuated the tail answer. fins. Oh, I see. Okay. हाँ It's got nothing to do with the answer though. हाँ समझ. Hypothetical Or it could be. pattern is an example. Is an example of what? Maybe थोड़ा सा अत्यंत GM है ये, but when you will hear the answer, you'll go, oh, like that. So you won't give a hint. I think if nobody gets it, then I'll give a hint. हाँ फिर ठीक है, 5 point के लिए हो ही जाएगा. हाँ ठीक है. नहीं, अबे रुकना, तेरी बारी आएगी. मेरे को आता है इसका आंसर, हिंट मत दो. तेरा हाँ, ठीक नंबर है. आएगा. शेयर नहीं तेरा किया मैं. हिंट नंबर मत दो बोल आएगा. रहा हूँ. नहीं यार, नहीं मालूम मेरे को. तेरा नंबर अरे भाई, आएगा. मेरे गाड़े. बस Rampay, हाँ Vipin. हाँ ले बिपिन, तेरा ही है, ले. वहां जहां पे भी लाल डॉट है, वहां गोली लगी तो एयरप्लेन को कुछ नहीं होगा, वो वापस आ जाएगा सक्सेसफुली. क्या बोलते हैं उसको? What is this called? नहीं, वो नहीं पता. ये पता है कि वो इधर स्पॉट्स में हाइपोथेटिकली गोलियां लगी तो प्लेन बच सकता है, सरवाइव Correct. हो सकता है प्लेन. Exactly. No, just that. What is that word that you just used? I don't know. It's survival pattern. Okay, I'll give it to you. 10 points. It's called survivorship bias in statistical analysis. So basically, when planes were being analyzed, they looked at all the wings and being hit, and they started working on that. But they didn't Wow. realize that the ones that were getting hit in the engines were not even coming back. So that means that the engines and the nose of the plane had to be worked on further. So survivorship bias is like that. You can read about it. It's pretty interesting. So statistical analysis में ये काम में आता नहीं, है. ये सुना हाँ. सुना है नाम. तो connection to Chintu. वाह. So B.R. Ambedkar studied in this, has some connection with this university. This is Dhammachakra. Dhammachakra Parivartan happened in India, in Nagpur, in 1954 at Diksha Bhumi. Okay. But what is the university in New York? In the city of New York. So city of New York में कौन सी है? Columbia होगी. Yeah. Columbia University. Right. So, okay, good. I think that World War II thing about the survivorship bias, that research, so World War II statistician Abraham Wald took survivorship bias into his calculations when considering how to minimize bomber losses to enemy fire. This was done at Columbia University. And a very weird coincidence, this person, Abraham Wald, was
coming to India, had come to India and was coming to IISc to give a lecture on this whole thing back in 1950s, died in a plane crash in Nilgiris, basically. So that was a sad bit. But then Columbia University's one famous alumnus is Dr. B.R. Ambedkar, who studied economics there. He embraced Buddhism. The day he did so, he celebrated as Dhammachakra Pravartan Din, not Parivartan, Pravartan. Pravartan, sorry. In Nagpur, which is obviously famous for oranges, which is Santra, which is the quiz today, baby. Connecting it all the way back to the beginning slide. Very Thank you so good. much. And I get 20 for this, right? Yes, Chintu gets 20 for this. And you win. Oh, wow. क्या बात है? हमने बोले थे राम देशपांडे की क्विज हम जीतते. I had a bonus question also in case we have. हाँ लगाओ. इसमें connection नहीं है लेकिन straight forward अत्यंत GM है. लगाओ ना. लगाओ. अत्यंत GM question है वो भी. Somebody gives the answer. Does that person, anyone close to Chintu, if they get 10 points, they win, kind of? No. Gade 27, Rampi 28, Bipin 50, Mere 65, Chintu 84. Okay, cool, Chintu. Congratulations. मेरे कितने हुए? 15, 15 ही हुए मेरे. 50. 50 तोला देखा क्या 50 तोला. Okay, this is the bonus question. In the 90s, the Got Milk advertising campaign was everywhere, from print ads to TV commercials. Many pop culture. So this connects to the first answer, by the way. That included video game legend Mario himself. In the commercials, Mario is voiced by X. So this was the person I had not pictured in the first slide. Not a very famous guy, so I don't expect anyone of you to know it. He's voiced Mario in every major video game and most minor ones also, starring the character. Donkey Kong में भी Mario का आवाज उसने दिया है. He's now played Mario for 30 years, which is an astounding achievement. He was not cast as Mario in the latest movie where Chris Pratt played Mario, but he did play Y, a particular role in that movie. Who's X and Y? X is Atyant the GM. Y, if you watch the movie. Y is Luigi. No, Luigi was played by Charlie Day. X is James Earl Jones. No, that was Darth Vader. Okay. Entertainment है हमारी तरफ से तो पहले से ही पास. So Charles Martinet is the name of the guy. He played Mario for 30 years in all the video games and everything. He played Mario and Luigi's father in the movie. Anyway, so that was that. बहुत ही छोटे टाइम के लिए रोल है ना उसका यार. So it's a pretty interesting quiz to make. I had a lot of fun. नहीं यार, it was good question. Good. बढ़िया कुछ थी. बढ़िया क्विज X. हमने पहले ही बोला राम देशपांडे, तुम हमारे सेल्फ डायग्नोसिस में तुमको भी ADHD है. तुम्हारा दिमाग जैसे काम करता है वैसे ही हमारा दिमाग काम करता है, इसलिए हम तुम्हारी क्विज जीतते हैं. ये नहीं सोचा था मैंने कल. मेरा दिमाग Dude, I tell you, इसके चिंटू के से कनेक्शंस में आधे पॉइंट में इतने कनेक्ट किए है उसने. और ये सब से रोना धोना बंद करना पड़ेगा इसने, क्योंकि इसको एंटरटेनमेंट के सवाल भी बहुत आए हैं. तो ये रोना धोना बंद करना पड़ेगा. डिसेबल है वो, ये कर. क्या? Try now. एक मिनट जरा, हम टॉयलेट, हमारा बच्चा टॉयलेट में है, उसको रेस्क्यू करके आते हैं. Oh yeah. ये आधे पॉइंट, all the even but ones. The only complete connection crack was absolutely the last question. Colombia. Correct. Otherwise, nobody cracked the entire. Correct. So that means it was a bit difficult to crack then, ना? थोड़ा easy कर देना चाहिए था. Okay. No, it was. It was good though. I think next time we do it, now you kind of got the fund of it basically. So next time we do it again, we'll probably be able to crack this. But one thing is, it's a lot of fun to set such a quiz. Because it's very easy to set up. You think of the answer first and then set the question. You know what I mean? So if I go to Nescafe's page, then I click somewhere on Wikipedia. Literally just wiki surfing जिसको बोलते हैं ना अपन. वैसे. Resume your journey. मैंने तुमको बोला था राम देशपांडे, तुम्हारा मेरा दिमाग एक तरह से ही चलता है. मैं भी पहले जब क्विज सेट करता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन सोचता हूँ, फिर उसके बारे में उल्टा जाना शुरू करता हूँ कि यार मेरे को है ना एनसिलिडस के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है, आंसर शुड बी एनसिलिडस, एंड नाउ वर्क बैक टू फाइंड क्वेश्चन क्या होना चाहिए. So correct. Initially, I started with the Mario question because we were playing Mario game, and then I thought maybe I can do question 1 easy and question 2 same topic but difficult.
thinking of all your favorite topics, basically. Ki bhai, if Gade gets astronomy, then he gets an easy astronomy, definitely, but does he get the difficult one? Like that. So, but then I read about the Supalakshmi thing. And that connection was phenomenal. जो Jasmine वाला था ना, मेरे को बहुत फंडामेंटली ऑसम लगा कनेक्शन. तो मैं बोला यार कनेक्शन ही कर लेते हैं फिर, so that it's a story connection rather than one word connection. That was the fun part. No, that was very nice. So connection was, you could figure them out, and it was, or most of it were almost impossible to be Atyanta GM. Yeah. Atyanta GM से तुम उसको solve नहीं कर पाओगे. Correct. चलो ठीक है. फिर. Thank you so Who's much, next? guys. विपिन Next अच्छा one खेलो is, कल. Rampi. Next master कौन है? हो गया Rampart. जो गया वो. राम प्रसाद. ठीक है. He was not in the mood today. Didn't look like he was interested in. चलो, good night. Okay. Bye. Good night. Bye bye bye. Good night. Bye.